अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वी विल ट्राई टू डिस्कस द करंट स्टेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. We will also talk about that what are the reasons for this state of affairs. A lot of reasons are there. बहुत सी वजूहात है when it comes to the strained ties between Kabul and Islamabad. But in this video, we will primarily focus on the presence of TTP in Afghanistan as a bone of contention between Pakistan and Afghanistan. And हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि what are the reasons why the current setup in Afghanistan, why the TTA are so reluctant when it comes to not going after the TTP and not addressing the legitimate and the genuine concerns of the state of Pakistan. And at the end, आखिर में हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि how Pakistan should deal with this problem, how Pakistan should deal with the current setup in Afghanistan. So if we start from the very relation, if we talk about the relation between Pakistan and Afghanistan, so it would not be an exaggeration to say that the current state of relation between Pakistan and Afghanistan are at a historic low since 2021. ताल्लुकात आप लोगों को पता है, बात यही तक आ गई कि फर्स्ट पाकिस्तान strikes target deep inside Kabul and parts of the Kandahar, and then to an extent उन्होंने भी retaliation किया. So it would not be an exaggeration, or we can safely say that the relation between Pakistan and Afghanistan are at a historic low. Now, वजूहात क्या है? You all are familiar with the fact that why we are experiencing the deterioration of relation between Kabul and Islamabad. A lot of reasons are there. For example, issues over the Durand line, refugee repatriation, transit trades, and so on and so forth. But इस वीडियो में हम जो फोकस करेंगे, that is the presence of TTP on the Afghan soil as a bone of contention between Pakistan and Afghanistan. जो recent flare of या recent skirmishes के पीछे जो issue है, that is the presence of TTP which are there in Afghanistan, operating from Afghanistan against Pakistan, and that is going to be a major a bone of contention between these two countries, these two neighbors, and largely if not exclusively responsible for the recent skirmishes between Pakistan and Afghanistan. So इस चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि what are the reasons why the current setup in Afghanistan, why the TTA, why are they so reluctant when it comes to not going after the TTP, when it comes to not addressing the strategic interests, when it comes to not addressing the genuine and the legitimate interest or concern of the state of Pakistan. So the first and foremost reason, it would be symbolic, but it matters a lot. That is the ideological affiliation between these two groups, the TTA and the TTP. Both are, it would not be an exaggeration to say that both are the ideological brothers of each other. Both are the two sides of the same coin. And we can safely say it because the drama which unfolded after the 9/11, so these TTP fighters, these TTP militants, they fought side by side with the TTA, with the Afghan Taliban, against the US and against the NATO forces. So वो ideological affiliation है, anti-Americanism, anti-West जो ideology इन दोनों की है, so we can't rule out it. The second reason, that is more of a strategic. The TTA, the current setup in Kabul, in Afghanistan, they are well aware that if we are going after the TTP, if we are addressing if we are following the instruction
of Islamabad to go and to control this TTP and to not allow the TTP to operate against Pakistan. So these militants, these fighters could join other groups operating in Afghanistan like the ISS and other groups. So TTA जो है तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान वो ये समझती है कि अगर हम TTP के ख़िलाफ़ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि ये हमारे ही पीछे पड़ जाए, हमारे ही गले लग जाए in terms of joining hands with the ISIS which are very much active in Afghanistan and which could leads to the dismantling or the toppling of the current setup. So TTA को ये खदशा भी है कि if we go against them, so they could join the ISIS against us. So that is also a strategic reason हम इसको or a strategic concern, so हम इसको भी ruled out नहीं कर सकते. इसके अलावा TTA जो है वो TTP को एज अ बार्गेनिंग चिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ प्रॉक्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप लोग देख ले इज एज वेल एज राइट नाउ ये करंट सेटअप जो है स्टिल इनकी बयानात को अगर आप लोग देख ले व्हेन इट कम्स टू द ड्यूरन लाइन, सो दे आर नॉट कंसिडरिंग द ड्यूरन लाइन एज एन इंटरनेशनल line, as an international border between Pakistan and Afghanistan. They are considering it, describing it as an imaginary line, which is a clear violation of the international law. So वो इन इलाकों में, इन फाटा की जो रीजन है, इन इलाकों में TTP के ज़रिए, TTP को एज अ प्रॉक्सी यूज़ करके TTP के ज़रिए इन ही इलाकों में अपनी प्रेजेंस चाहते हैं. So they are using TTP as a proxy because इन दोनों का क्लेम ही यही है कि ये जो फाटा का जो रीजन है यहाँ पर रियासत की रिट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर हम शरिया ला का इन्फास करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो दैट इज़ आल्सो अ रीज़न, क्योंकि वी कैन से दैट बोथ ही इस बॉर्डर को नहीं मानते, इस रीजन को क्लेम करते हैं, यहाँ पर स्टेट की रियासत की रिट को नहीं मानते, and both are of the view that we should control this region, it belongs to us, and there should be an extension of the Islamic Emirate. जो अफगानिस्तान में एक इस्लामिक एमिरेट इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल इन 2021. सो ये इस ही रीजन में वो क्या करते हैं, वो उस ही एमिरेट की, इस्लामिक एमिरेट की एक एक्सटेंशन चाहते हैं. एंड फॉर दैट रीज़न, फॉर दैट वेरी पर्पस वो क्या करते हैं, TTP को एज अ प्रॉक्सी, एज अ चिप इस्तेमाल करते हैं. द फोर्थ रीज़न दैट इज़ TTA ये जानती है कि पाकिस्तान की भी कुछ लिमिटेशंस है इस ही रीजन में व्हेन इट कम्स टू दिस रीजन, कि टू एन एक्सटेंट पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी से भी काम ले सकता है, इकोनॉमिक कोहेजन से भी काम ले सकता है, काइनेटिक मेजर्स से भी काम ले सकता है, लेकिन टू एन एक्सटेंट इस्लामाबाद टू एन एक्सटेंट बियॉन्ड नहीं जा सकता. उसकी रीज़न ये है कि TTA को पता है कि इफ़ इस्लामाबाद इज़ गोइंग आफ्टर अस, इफ़ इस्लामाबाद इज़ क्रॉसिंग अ लिमिट in terms of disproportionately targeting not only the TTP but the TTA as well. So the TTA know that Islamabad can't afford. तो फिर TTA क्या करेंगी? TTA obviously will join the Indian, will act as a proxy. Still the TTA is more or less a proxy, acting or playing in the hands of Indians. So इस strategic limitations को भी वो देखती है TTA कि एक लिमिट्स से आगे इस्लामाबाद हमारे पीछे नहीं आ सकता, क्योंकि उन लोगों की मजबूरी है. ईस्टर्न बॉर्डर इस्लामाबाद का जो है वो एक हॉट बॉर्डर है विद इंडिया, सो दे कांट अफोर्ड एट अ टाइम टू हैव ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर
लाइक वी कांट अफोर्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इंडिया के साथ ईस्टर्न बॉर्डर और इन लोगों के साथ वेस्टर्न बॉर्डर। सो वो एक स्ट्रेटेजिक लिमिटेशन को वो पाकिस्तान की एक कमज़ोरी वो कंसिडर करते हैं। तो वो so far like and the fact is that like since the fall of Kabul 15th of August 2021, on the very first day Pakistan diplomatically, economically incentivizing them and in order to perceive them, in order to convince them कि आप लोगों ने हमारी जो इंटरेस्ट है जो कि टीटीपी हमें हार्म करती है, इन लोगों के पीछे आप लोगों ने जाना है, तो उसके पीछे वो लोग जाते ही नहीं है। 3-3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए तकरीबन। इसके पीछे वजह यही है कि ये लोग जानते हैं कि इस्लामाबाद एक हद तक तो हमें कोहर्स कर सकता है, एक हद तक तो हमें इकोनॉमिकली प्रेशराइज कर सकता है, डिप्लोमेटिकली प्रेशराइज कर सकता है, लेकिन एक हद से आगे नहीं जा सकता, राइट। एंड that is that and which is true that we can't afford to push the TTA, the very setup that we celebrated after the fall of Kabul. And ironically, what is happening right now is absolutely ironic. So like we can't afford to push them to the Indian arms. So ये भी एक रीज़न है, उनकी जहन में ये बात है कि एक लिमिट तक ये स्ट्राइक कर सकते हैं, इकोनॉमिक टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डिप्लोमेसी कर सकती है, लेकिन बियॉन्ड नहीं जा सकते। सो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। The last reason which I must talk about that is कि ये लोग जो है ये अभी भी अपने आप को वो what happened in 1980s, then what happened after 2001, ये लोग अभी भी अपने आप को वो गुरेला माइंडसेट इनकी है। Like no one can point out a single statesman in the current setup in Afghanistan. So still वो अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन की तहत ट्रीट करते हैं। They don't know much about the statecraft, that how state act, how state conducts its affairs internally as well as externally, how states should deal with its neighbors. पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक नाइबर है, legitimate concern हम उनको डिस्कस करते हैं, हमें उनसे कोई इलिजिटिमेट डिमांड हम नहीं करते। दैट इज़ अ वेरी लेजिटिमेट डिमांड कि आप लोग इन टीटीपी को क्या करें, कंट्रोल करें। सो स्टिल द वेरी फिफ्थ रीज़न विच इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेलमेट सिंस 2021, दैट इज़ कि ये ग्रुप जो है ये स्टिल अपने आप को एक मिलिटेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करते हैं। लाइक they are not considering diplomacy, they are not considering how states should manage its internal affairs when it comes to the girls' education, how states manage its external affairs when it comes to its deterioration of relation with Islamabad. And उसकी रीज़न ही यही है कि since 2021 आप लोग देख ले, there is only one country in the international arena that recognized formally recognized Afghanistan, and that is only Russia. On the other hand, आप लोग सीरिया की बात कर ले, सीरिया का जो current president है अहमद अल-शरा, the most pragmatic person right now in this arena. Within this year उसने अपनी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया वेस्टर्न पावर में, चाइना and so on and so forth. Even he was the very first leader of Syria to address the UN General Assembly, to address the 80th session of the UN General Assembly in more than 6 decades. So you see pragmatism on the part of him. लेकिन यहाँ पर आप लोग देख ले तो यहाँ पर आप लोगों को स्टेट्समेंट्स की कमी नज़र हमें आ रही है। हमें like we can say that they don't know much about the statecraft. तो इस चीज़ को भी पाकिस्तान ने कंसिडर करना है कि ये लोग जो है आजकल काबुल में है, कंदहार में है, एंड दे विल लव टू बी इन दिस माउंटेन्स। इनको कोई मसला नहीं है, दे कांट, दे डोंट थिंक अबाउट इट। इन लोगों को ना ही अपनी सोसाइटी की परवाह है, ना ही अपनी रियासत चलाने की, बचाने की परवाह है, कोई परवाह नहीं है।
they will not easily address the security concern of Pakistan, क्योंकि ये लोग जो स्टेट क्राफ्ट होती है, जो स्टेट्समैन, द वे स्टेट्समैन ऑपरेट, द वे स्टेट्स वर्क इन मॉडर्न एरिना, ये लोग उस डिफिनीशन पर पूरा उतरते ही नहीं है। आज ये दे विल लव्ड, आज जो है ये लोग इस काबुल में है, कंदहार में है, दे आर द रूलर्स एंड दे वुड बी वेरी कंफर्टेबल। कल अगर कोई हमला करे और ये लोग फिर जो है ना वो गारों के अंदर चले जाए और गुरीला फाइटिंग शुरू करे, तो they are not that much cautious when it comes to leading their society, reforming their society, and they are not that much cautious in terms of erecting Afghanistan as a state, building Afghanistan as a state, as a society, how to deal, how Afghanistan should be treated, how Afghanistan should treat other countries, and so on and so forth. So these are the reasons, from ideological to strategic. Indian factors भी है, इनकी कोई डोमेस्टिक कंपल्शंस भी है, और इन लोगों की अपनी ही कुछ लिमिटेशंस हैं, वो अभी वो उस माइंडसेट से नहीं बाहर आए हैं. सो दीज आर द रीजंस व्हाई दे आर सो रिलक्टेंट in terms of not going after the TTP. Now the last part of this video, which is very important, that is how Islamabad should deal with this problem, how Islamabad should deal with the TTA. So like from the day one, like from the very fall of Kabul on 15th of August 2021, Islamabad started with diplomacy, then economic coercion, economic leverage, then military strikes. Pakistan conducted first in 2024 and then right now. तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की पाथ को भी चूज़ किया है, इक़्तिसादी जो ट्रेड है, ट्रांजिट रूट्स है, उसको भी एज ए लेवरेज इस्तेमाल किया है, रेफ्यूजी रिपैट्रिएशन को भी एज ए लेवरेज इस्तेमाल किया है. इवन एक रियासत के पास जो लास्ट रिजॉर्ट होता है, जो अल्टीमेट सोल्यूशन होता है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ फोर्स, उसको भी इस्लामाबाद ने किया है, पाकिस्तान ने किया है. लेकिन स्टिल वी सी ए डिटेरियोरेशन ऑफ रिलेशन विद आवर वेस्टर्न नेबर, अनफॉर्चुनेटली. सो पाकिस्तान शुड गो फॉर अ कंटिन्यूअस डिप्लोमेसी. कतर में हो रही है, इस्तांबुल में हो रही है, तो आप लोगों को ये डायनामिक्स आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये इशू, इट वाज एन इशू बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. नाउ आप लोग देख सकते हैं कि कतर इसमें आ गया, इस्तांबुल इसमें आ गया, तुर्की इसमें आ गया. दैट्स वेरी गुड साइन. पाकिस्तान शुड मोबलाइज एज मच एज कैन, रीजनल कंट्रीज़ को मोबलाइज करे डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनल कंट्रीज़ को, सुपर पावर्स को, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, चाहे वो यूएस हो, उनको भी मोबलाइज करे in terms of collectively pressurizing the TTA, to persuade them, to pressurize them to control the TTP, to not allow the TTP, to not use TTP as a proxy, and against any country, against not a single country in this region, especially Pakistan. So this is also be a good sign. Economic tools को भी leverage करें, military might को, military force को भी use करे if necessary. So अब how Islamabad should deal with the TTA when it comes to persuading them to address the genuine and the legitimate concern of Pakistan. So Pakistan should be cautious. Like it is a sign of warning कि eastern जो हमारा border है with India, very much hot since the very inception, since the very partition. Western border भी गर्म होता जा रहा है, unfortunately. So we can't afford. It would be tantamount to a strategic encirclement, which is not in the interest of Pakistan. So we should be cautious. We should deal with the TTA. We should solve this problem with utmost seriousness, with utmost restraint. हमें restraint का मुजाहरा करना चाहिए. And we should do whatever it takes. Pakistan should do whatever it takes. It might be diplomacy that is happening in Doha, in Ankara. It could be an economic incentivization in terms of extending the CPAC into Afghanistan. It could be military force if necessary. Whatever Islamabad is taking,
or doing, it should be with utmost seriousness. Pakistan should do whatever it takes in terms of securing its national security interest, that is to curb, to eliminate the presence of TTP, to not allow them to infiltrate into our country, to harm us, harm our security personnel, civilians, and so on and so forth. But we should equally consider the fact that we should deal with the TTA in a way to persuade them to address our security concern. But equally important is the fact that we should not coerce them beyond an extent, and which could lead to pushing them into the Indian arms. And India right now, as well as in the future, will try to use the TTA as a proxy against Pakistan. So it is not in our interest by no account. So we should be very cautious to not to do whatever it takes when it comes to securing the political independence, when it comes to securing or ensuring the territorial integrity, the sovereignty of Pakistan, but should be utmost careful to not push the TTA into the arms of India. Thank you so much.